Hello friends, this is Vasudeep Panda. Welcome to Master English. पिले वो ड्रामा पढ़ियो आज. The Monkey's Paw plus 2 second year English. 100% syllabus ଭିତରେ ଅଛି. ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି. The Monkey's Paw. ମାଙ୍କଡ଼ର ପଞ୍ଝା. ଗୋଟେ ହରର ଷ୍ଟୋରି. ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ syllabus ଭିତରୁ though I'm not 100% okay with my health, still the class will be there and hope you will enjoy. आज केवल मात्र 2 पेज पाठ पढ़ा बेसी पढ़ार ना बेसी पढ़ार पेशेंस ना already I have taken 6 classes today, so only 2 pages will be there. The Monkey's Paw, the horror story of CSS English. So the writer is W.W JACOB. Who the writer? W.W JACOB, and the story is dramatized by Mara Rockcliffe. Mara Rockcliffe के द्वारा नाट्य रूपांतर ही चीटा है. तो एकांकिका में जहाँ कोचे एकांकिका The Monkey's Paw. So W.W JACOB, William Waymark Jacobs, was born on 8 September 1863 1863 मसीहा, and is an English poet. Is an English poet, author of short stories and novels. He was also औपन्यासिक मध्य. ठीक है पिले. Although much of his work is humorous, he is most famous for a horror story, The Monkey's Paw. And this story, The Monkey's Paw, had brought him fame and name. तो यही स्टोरी पाई से स्पेशली फेमस. तो ये क्लासटा आम कंटिन्यू करवा सरला पर्यंत. तापरे जीवा आउ गोटे स्टोरी अच्छी, द नाइटिंगेल एंड द रोज, लव स्टोरी, सेटा भी पढ़ा नहीं परवर्ती पर्यायर. तो आज ये क्लासटा स्टार्ट करवा. तो पिले एक्चुअली कौन अच्छी स्टोरीर क्यारेक्टर होउचंती चारि. देयर आर 4 कैरेक्टर इन द स्टोरी. Mr. White, Mistress White, Herbert, their son, and one more is there, Sergeant Major Morris. These are the characters of the story. Ketara character? Mr. White, Mistress White, Herbert, their son, and one of their friend, Sergeant Major Morris. और Sergeant Major Morris के विषय यदि हम जानिबा, he was an ex-army officer in the British Army. ब्रिटिश आर्मी रो जने रिटायर्ड ऑफिसर जे कि भारतर बॉम्बे रे 20 वर्ष काम करछंती ब्रिटिश अमल रे. ठीक अछि. तो एटा होछि सेटअप एंड वर्तमान जीवा सेट ऊपर को. सेट कहले कोन, सीन टा कोन, व्हाट इज द सीन. सेट स्टैंड फॉर सीन. सो व्हाट इज द सीन होछि द व्हाइट्स फैमिलीज होम. व्हाइट फैमिली कर घर. And in a newly developed English suburb कहले कौन बिले माने अर्बान शब्द रु एटा suburb माने पूरा शहर नुह, शहर रो उपांत. suburb कहले उपांत, शहर रो उपांत रे थिबा एक घर जोटी व्हाइट फैमिली रहउचंती. एंड अराउंड 1920 पाखापाखि 1920 मसीहार कथा. ठीक. so scene 1 रे सिचुएशन टा एटा थिला तांकर लोकेशन. वर्तमान जीवा what is the situation होची a dark and stormy night. What is it? A dark and stormy night. एक अंधार झड़ तूफान रात्रि. A dark and stormy night. The sound of heavy rain can be heard. माने वर्षार चट शब्द चारिआडे सुना जाउची. अकेजनल थंडर क्लैप, मझे मझे घड़घड़ी शब्द भी सुना जाउची. घड़घड़ी शब्द, थंडर क्लैप कहले घड़घड़ी, थंडर क्लैप. द व्हाइट्स लिविंग रूम इज cozy and bright. cozy कहले कंफर्टेबल, ब्राइट कहले उज्जवल. माने चारिआडे लाइट लागिची. cozy आरामदायक रूम जोठी लिविंग रूम रे समान रहउचंती. इट इज cozy and comfortable. मिस्टर व्हाइट एंड हर्बर्ट प्ले चेस. आउ सिचुएशन कोन? मिस्टर व्हाइट and Herbert, they are playing chess. सेमाने दुई बापा पुओ चेस खेलुचंती. and while Mistress White, the lady of the house, Mistress White
knits by the fire. Knits कहले बुणीबा तो माँ माने जमती स्वेटर बुणती कैप बुणती आम देखी समस्ते. सी वाज knitting by the fire. विदेश रे बिलात रे से बहुत ठंडा ही था ठंडा प्रधान देश तो से भितर कौन था गोटे गोटे चुली था जो निआ जलाऊ था रूम को गरम करने तो से ही पाखे से बस कौन कर बुणुंट कि गोटे बणुंट दिस इज द सेट मन रहा सेट प्रिंट होगा कौन बापा बहुत चेस खेलुंट माँ चुली पाखे निआ पाखे बसिकी बुणुंट एंड ऑर्बट इज विनिंग जीतुची किए चेस खेल रे जीतुची किए हॉबर्ट इज विनिंग देयर सन इज विनिंग से जीतुचे सो हॉबर्ट फर्स्ट कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड हियर हॉबर्ट कौन कहला नॉट लुकिंग टू गुड फॉर यू इज डेट नॉट लुकिंग टू गुड फॉर यू इज डेट बाबा आज तुम दिनटा भल ना किए कहला हॉबर्ट कहला कौन कहला बाबा तुम आज हारुच तुम भल खेली पार आज तुम दिनटा भल ना तुम किए कहला हु सेड हॉबर्ट मिस्टर व्हाइट कुड यू प्लीज बी क्वाइट कुड यू प्लीज बी क्वाइट अरे टिके चुप हो मत खेलवाई दे जिते जड़े लोक हारुए बोले से समय जड़े किसी जदि कहे साइलेंट जा नहीं सो कुड यू प्लीज बी क्वाइट आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट मु कंसंट्रेट करने चेष्टा करुँची तू मत बारंबार कथा डिस्टर्ब कहीं करुँ वाई आर यू डिस्टर्ब मी अगेन एंड अगेन विथ सेलिंग दिस दीज आर द वर्ड्स मिस्टर व्हाइट ही पॉज अनदर मोमेंट किसी समय पॉज हो गला किसी समय रहीगले से पॉज अनदर मोमेंट देन मेक्स ए मूव तापर से मूव माने गोटे कौन चेस पीस नहीं कि मूव कर आगु को गोटे स्टेप चलते लिसन टू दैट विंड हॉलिंग आउट देयर तापर से कहते लिसन टू दैट विंड हॉलिंग आउट देयर हॉलिंग आउट कहले शब्द पवन शब्द देख घोघा घोघा पवन बोची तो देखा जाऊनी शुणु टी शुणु केमती पवन बोची बारे केमती झड़ हो किए कही मिस्टर व्हाइट क्या हॉबर्ट को Hobart keeping it attention on the chessboard. He has not at all given attention towards the father's words. He is giving whole concentration on the chessboard. Who? Hobart. He told. से कहला कौन कहला आई एट मु शुणुची कौन डहला सेठू मु काला मु शुणुची आई हियर इट किए कहला हॉबर्ट यस हॉबर्ट सो मिस्टर व्हाइट यू वुड नॉट शो अप इन अ स्टॉर्म लाइक दिस आई बेट यही समय एक्चुअली घर को जड़े किए आसबार अच्छे किए आसबार अच्छे सर्जेंट मेजर मोरिस आसबार अच्छे तो बापा कथाटा को डाइवर्ट करने से कहले जे बाबू मु भावुची आज सी आसब नहीं ही वुड नॉट शो ऑफ इन ए स्टॉर्म लाइक दिस एभलिया स्टॉर्म एभलिया झड़ तूफान रात्रि रे मु भावुची से आसब नहीं से कहले सर्जेंट मेजर मोरिस एंड आई बेट बेट कहले चैलेंज मु चैलेंज करुच्ची से आसब नहीं हॉबर्ट मे बी नॉट नो प्रॉब्लम आसीपारे न भी आसीपारे चेक कहली कि से गोटे पीस चलाई गोटे माने तार चेस पीस चलाई से मिस्टर व्हाइट रिचेस फॉर ए चेस पीस यही समय मिस्टर व्हाइट कौन कर चेस पीस से भी चलैवाई आगभर होती एंड यही समय जिते बड़े से चाल चलई कही हॉबर्ट आ गए चाल चलई हसी पकई आई बोन मु जीति जाइए सो ट्रायम्फेंट विक्ट्री ट्रायम्फेंट कहले विजयर हस ट्रायम्फेंट मैट मैट कहीकि चलई दे चेक मैट नहीं सो मिस्टर व्हाइट पुल्स हिज हैंड बैक मिस्टर व्हाइट पुल्स हिज हैंड बैक हाथ टाणी नहीं किए बुढ़ा That is what I can understand about living out in the middle of nowhere like this. Every time it rains, the roads get flooded and no one can get out near. And what do those politicians in town do about it? Nothing. As so for the 3 votes just don't count. So in this case, what happens? Now, Mr. White is trying to divert the attention of Howard and his mother from the chess game because he has lost the match. से जो हारी जाइछंती ये बाबू कौन करुँच कथाटा को डाइवर्ट करने नौकरी ना चिड़ेबे माँ पु
तेणु ये डाइवर्ट करने कथा को डाइवर्ट करने कौन कहते दैट इज व्हाट आई कैंट अंडरस्टैंड अरे शुण 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 गोटे कथा मुझे बुझी पार ना दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट लिविंग आउट इन द मिडल ऑफ नोवेयर लाइक दिस ये गोटे जगार रहिले मु बारंबार मना कर तुम दी माँ पुओं को बारंबार मना कर जगह घर तैयारी करवानी ये जगह रहिले हैं बुझा पड़ूनी गोटे कौ जगह आम रहिले कौन रहा है ना एवरी टाइम इट रेन्स जिते बेले भी वर्षा हो एवरी टाइम इट रेन्स द रोड्स गेट फ्लडेड रास्ता सारा पानी रास्ता सारा कादुओ द रोड गेट्स फ्लडेड नो वन कैन गेट आउट हियर कौन सी लोग ये आसी पार ना एटू किए जापर ना and what do those politicians in town do about it and whatever politicians are there जो मन को हम भोट देकी रखीचे से मन करछंती कोन हम बिसर के भाबू भी नांती so do about it nothing किछि भी नहीं nothing I suppose our 3 votes just don't count suppose कहले think भाबीबा so I suppose I think so that our 3 votes doesn't count at all हमर 3टा वोट रो कोन से मूल्य ही नहीं so एठी एक कथा कहिबार अर्थ what is the meaning of this type of words here in between the chse Mr. White wants to divert the attention of Hobart and his mother because she was losing the match कारण से मैच हारू चंपी that's why he wants to divert the attention of both the lady and her son so then मिस्ट्रेस व्हाइट सुथिंगली सांत्वना देला बेले सुथिंगली कहले सांत्वना देला बेले मिस्ट्रेस व्हाइट सुथिंगली नेवर माइंड डियर चिंता करो नहीं है स्वामी नेवर माइंड डियर मे बी विल विन द नेक्स्ट गेम मे बी विल विन द नेक्स्ट गेम नेक्स्ट गेम तुम जितब है कहीं टेंशन नौ कथा कहीं भूलौ कि तुम किए कही कथा दीज आर द वर्ड्स ऑफ Mistress White. Mr. White looks up sharply to see Mr. White. ए समय रे बुढ़ा टे कटमट करी चाहिए गोटे मजा लगे माँ पु मिसिक गोटे नाच कर कटमट कटमट कर चाहिए किए बुढ़ा looks up sharply to see Mistress White and Orbit is smiling at him. पुओ देखुची बापा को हसुची स्माइल करुचे किए पुओ अवट स्माइलिंग एट हिम इन एम्यूजमेंट एम्यूजमेंट कहले कौन जोक माने जोक कला बेले खते हैला बेले एम्यूजमेंट आनंद रे हिज अनोयंस फेड्स एंड हिज स्माइल्स गिल्टिली हिज अनोयंस कहले इरिटेडनेस अनोयंस कहले इरिटेड ता भितरे मिस्टर व्हाइट के भितरे जो इरिटेडनेस थिला पुओर हस देखिकी फेड्स हो जाई तांकर जो इरिटेशन टा फेड्स एंड हिज स्माइल्स गिल्टिली माने दोषी मानकर हस सते हारी गला बेले मनीष चेष्टा करे हसवा कृत्रिम हस जमती हसे हाँ से भाया सी हसी अल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास जल्दी करवा आस डोंट वरी एंड एट द वेरी मोमेंट ए गेट बैंग्स डाय करके बाजी कबाटे ठक ठक शब्द आस गेट बैंग्स हेवी फुट स्टेप्स आर हर्ड अप्रोचिंग द डोर एंड हेवी फुट स्टेप्स माने बूट रो जो टक 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 शब्द शुभिची हैं कबाटे नकिंग साउंड शुभिची एवं कौन है माने पाद शब्द शुभा जाइए गेट बैंग्स एंड हेवी फुटस्टेप आर अप्रोचिंग द डोर हॉबर्ट साउंड्स लाइक ही मेड इट आफ्टर ऑल ए समय हॉबर्ट कहला ता बापा को बाबा लगुच किए जन आसला बोधे सर्जेंट मेजर मोरिस आसी जाइए हैं साउंड्स लाइक ही मेड इट आफ्टर ऑल मिस्टर व्हाइट गोज टू द डोर कबाट पाखु गले खोलिया बंधु आउछंती हैं ग्रीट सर्जेंट मेजर मोरिस वेलकम करिसेंती वेलकम टू आवर होम ग्लैड टू मीट यू एटसेट्रा एटसेट्रा ग्रीट सर्जेंट मेजर मोरिस हु कम्स इन से भितर को आसंती मेजर मोरिस देन बिगिन्स वाइपिंग हिज फीट तापर पाद निज पाद को कौन करछंती पोछापोछि करिसेंती वर्षा रे आउछंती निश्चित भाव पोछापोछि हेबे फिट सेकिंग आउट इज अम्ब्रेला छताटा को टिके हलई देइछंती पानी झड़िबो जेमती आमे जेमती करे वर्षा बेलू आसिले बाहर को एटसेट्रा मिस्टर व्हाइट एते बेले दी जण घर को आइछंती मिस्टर व्हाइट को सहित मेजर मोरिस भी घर को आछंती इंट्रोड्यूसिंग देम इंट्रोडक्शन पर्व ही इज सर्जेंट मेजर मोरिस इज माय सन हॉबर्ट
इज माय वाइफ मिसेस व्हाइट एभलिया इंट्रोडक्शनटा सरी पिले सो दे शेक हैंड्स तापरे बंधु मिलन पर्व हाथ करमर्दन करिसंती से माने and the three oldest people sit down while Howard goes to fix tea means to make tea आम भाषा तो तीन जन जाक माने हवर्ड सॉरी मिस्टर व्हाइट मिस्ट्रेस व्हाइट एंड सर्जेंट मेजर मॉरिस तीन जन बसचंती कौन करबा गपुचंती हवर्ड जाइछि चाहा तैयारी करिबा पाई सो एटा होछि प्रथम सीन रो प्रथम दृश्य Next, I'll be glad you made it. We didn't know if you'd come out in this storm. नहीं कौन आइला glad you made it किए कहूची मिस्टर व्हाइट खुशी लगला तमें आसिल glad you made it and we didn't know if you'd come out in this storm. आमे तो विश्वास भी कर नथिलु आमे जानि नथिलु जे एभलिया झड़ तूफान रे तमें आसीबो in the storm मॉरिस टिके आश्चर्य हो गला कौन कहल storm who said मॉरिस this little shower ए टिके वर्षा को तमे storm बोली कहउछो झड़ बोली कहउछो chuckles हसी देछि chuckles के yes Mr. Sergeant Major Morris. You would not think much of this if you would have ever been holed up in Bombay during the monsoon season. Hold up कहले stayed. HOLEDUP. Hold up कहले कौन पहले stayed. So you would not think much of this. तमें ये विषय भावम तो भी नहीं. You would not think much of this. तमें ये विषय भावम तो भी नहीं. कौन है if you had ever been holed up in Bombay during the monsoon season. तमें जदि बॉम्बे रे केबे वर्षा दिन रही थाम तो यही साधारण झिपझिप वर्षा को केबे वर्षा बोली झड़ बोली कहम तो नहीं हु टोल्ड दिस आर द वर्ड्स ऑफ सर्जेंट मेजर मॉरिस एक कथा किए कहिछि सर्जेंट मेजर मॉरिस नाउ देयर आर सम स्टॉर्म लेट मी टेल यू एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टॉर्म्स आर देयर इन बॉम्बे लेट मी टेल यू वर्तमान मु कहूछि कोबळा वर्षा हुए कोठी बॉम्बे रे मिस्ट्रेस व्हाइट मन रखा पिले लेडी माने सब बेले जो माने भी कथा होतंती कान डेरी की सुनुथिबे घर स्त्री मानकर गोटे अभ्यास दिज जी भी कथा होचंती तुम फोन रे भी कथा होतो जे कान डेरी की सुनुथेबे तो ये बाबू शुणुची किए मिस्ट्रेस व्हाइट जिते बेले ये बाबू कहते बॉम्बे रो कथा सी मझिरे आसचंती एंट्री मारचंती किए मिस्ट्रेस व्हाइट कौन कहते Did you live in India a long time, Sergeant Major? Did you live in India for a long time, Sergeant Major? अच्छा आपण कौन बहुत दिन रही थे बॉम्बे रे Did you live? आपण बहुत दिन रही थे कि के कहिछि Yes, Mistress White 20 and to utter delight, to utter surprise, Sergeant Major Morris hasn't replied. Mr. White has replied in favor of Sergeant Major Morris. मेजर कहवा पूर्वर मिस्टर व्हाइट कहीदे जेहेतु से बंधु 21 years he has been gone 21 वर्ष रही तुम जान ये 21 वर्ष कौटी रही बॉम्बे रे when he joined off with the army जिते से आर्मी रे जॉइन करथिला he was not a day older than Herbert there and neither was I से हर्बर्ट रो जेतिकी बयस तार भी सेतिकी बयस थिला मोर भी सेतिकी बयस थिला हर्बर्ट को 20 वर्ष होइछि मते भी सेतबेले 20 वर्ष होतला याकू भी 20 वर्ष होइतला आ से 20 वर्ष बयस रे से 21 वर्ष धरी की कोठी रहितला मुंबई रे काहे की द रीजन वाज ही जॉइंड द ब्रिटिश आर्मी मोरिस कहिछि समरे वेल टाइम फ्लाइज आ छाड़ पुओ सकाळ पखाळ नाही समय परिवर्तित हुए समय चालू थाए टाइम इज फ्लेटिंग ए भलिया किछि कहिछि त पिले बाकी जिनस काली जो हर्बर्ट रहिला ओके सार दबा हर्बर्ट ब्रिंगिंग द टी हर्बर्ट ए समय कोन करछि चाहा आनि गाइछि आई वुड लाइक टू गो टू इंडिया अंकल आई वुड लाइक टू गो टू इंडिया मु भारत जीवा पई चाहे
See the old temples, maybe catch one of those holy men performing miracles. And see the old temples, wanted to see the old temples, पुरुଣା मंदिर सब देखिବାକୁ चाहे. Maybe catch one of those holy men performing miracles. सेठी जो साधु सन्थ माने हाथुरु विभूति बाहर करंती, माने पाटिरु आउ कौन कौन भी काढ़ंती, मिराकल्स सब प्रदर्शन करंती, से जिनस सब देखिबा पई चाहे. हैं men performing miracles. Morris shaking his head and sighing. এই সময়ে মরিস মুন্ড হলাই ଦେଇଛି. নিশ্বাস নেইছি সে, দীর্ঘ নিশ্বাস নেইছি. and କହିଛି you are better off here. ତମେ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛ, ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଭାରତ ଯାଆନା. you are better off here. ତ ପିଲେ ଏଠି ରହିଲା ଆମର ଥାକ ଯେ କାହିଁକି ସେ କହିଛି ତୁ ଭାରତ ଯାଆନା ବୋଲିକି, କ'ଣ ସେ କାରଣ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ହେବ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା. See you there at 7:30 PM tomorrow. Bye bye. Take care.